साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है आई हो, जिसका नाम है मतलब उसका नाम है आई हो, और वो बेसिकली ही इज अ जापानीज सिटीजन और वो आया है लाहौर फूड को एक्सप्लोर करने के लिए। Quite similar to like Japanese curry. It's hot, it's piping hot. Yes. Wala naan. Yeah, yes. तो यार आज हम लोग आ गए हैं अंदरून लाहौर और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है आई हो, जिसका नाम है मतलब उसका नाम है आई हो, और वो बेसिकली ही इज अ जापानीज सिटीजन और वो आया है लाहौर फूड को एक्सप्लोर करने के लिए। आज हम उसके साथ होंगे, हम उसको दिल्ली गेट के अंदर डिफरेंट चीज़ें खिलाएंगे भी और उससे पूछेंगे कि उसका रिएक्शन क्या है इन चीज़ों के ऊपर। तो पहला स्पॉट हमारा है कूजी हलीम। अच्छा, ये कूजी हलीम की दुकान थी, यहाँ पे इनकी एक प्रॉपर बड़ी दुकान हुआ करती थी दिल्ली गेट के अंदर, लेकिन कुछ अर्सा पहले ना उनकी दुकान गिर गई और उस गिरने की वजह से उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे ये अपना एक छोटा सा प्यारा सा स्टॉल बना लिया। सो व्हाट्स योर नेम? Aoi. Okay, so our first spot was Kuzi Halim. How do you find this Halim? Uh, What's your reaction on this Halim? it's really like interesting. Like Okay. yeah, like actually like this is a quite similar to like Japanese curry. So like like I didn't expect like having this kind of taste in Pakistan. So it's really interesting. It seems like you really enjoyed the Halim. You have Yeah, finished yeah, it all, yeah. and we haven't finished it yet. Absolutely. कुजी हलीम ट्राई करने आए थे दिल्ली गेट पे। कुजी हलीम है, जैसे मैंने आपको अंदर इनकी स्टोरी बता दी है कि वो गिर गया था और उसके बाद उन लोगों ने अपना एक ये छोटा सा स्टॉल लगा लिया है और अभी ये लोग बाद में वहाँ पे शिफ्ट भी कर जाएंगे। इनकी हलीम ट्राई कर लेते हैं किस तरह की है। मैंने पहले ट्राई कर ली है, लेकिन हम दोबारा ट्राई करके आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। मैंने पहले आयो के साथ ट्राई कर ली थी, ही रियली लव्ड इट और इसने इसको रेट किया 10 आउट ऑफ 10। लेट्स सी के अब जाहिर है वो तो बाहर से आया, उसको तो उस फ्लेवर का नहीं पता। सो विल ट्राई इट और विल टेल यू कि इसका रेट और इसकी फ्लेवर किस तरह की और इसको हम क्या रेट करते हैं। अच्छा, कुजी हलीम का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इसके सारे लवाजमात के साथ। जब तक आप इसके ऊपर इसके प्याज, लीमू और वो सारे लवाजमात डालो तब तक मज़ा नहीं आता। इसको मैंने पहले खा लिया तो इसकी हालत ये हो गई, लेकिन चल इसको ट्राई करते हैं। इसकी जो ओरिजिनल लुक थी वो मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो के अंदर। अच्छा, कुजी हलीम का ना ऑलमोस्ट लाहौर के अंदर सेम फ्लेवर होता है। मैंने थोड़ा स्पाइसी कर लिया था। अच्छा, बेसिकली सिंपल हलीम होती है, इसका फ्लेवर बनता है आपके ऊपर डालने वाले लवाजमात से। आप जितनी चीज़ें डालोगे उस हिसाब से इसका फ्लेवर बन जाएगा। तो फॉर मी दिस हलीम इज़ अ 9 आउट ऑफ 10। अच्छा, उसका भाई का नाम इस तरह का कि मेरा ना मुंह कलाबाजी खा जाता है, लेकिन बहुत स्वीट आदमी है यार, बहुत अच्छे तरीके से। और वो ना शुरू में बड़ा कंफ्यूज रहा कि यार मैं इनके साथ ईजी होऊंगा भी कि नहीं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हमारे साथ बहुत ईजी हो गया। उसको हलीम इतनी पसंद आई है कि उसने पूरी प्लेट अकेले ने खा लिया है। हम दो लोग थे, हमने दोनों से मिलकर वो खत्म नहीं हुई और उसने पूरे ने अकेले ने खा लिया। तो अच्छी हलीम है, खैर इसको अब जरूर ट्राई करना होगा। अब इसके बाद हम आगे जाएंगे, यहाँ पे मस्जिद वजीर खान से बिल्कुल आगे जाके हमें एक अच्छी खीर मिलती है। लोग आ गए हैं खलीफा नान शॉप पे, इनका कीमे वाला नान बहुत मशहूर है। हमारे साथ आए हो। अच्छा, इसने पहली दफ़ा तंदूर देखा है तो बेसिकली वो उसको अवन कह रहा है। खैर वो उसको ट्राई करने आए हैं, उसको बहुत शौक था कि इसकी मैं वीडियो बनाऊँ। Special dish called as a keema wala naan. Basically, is that bread you ate earlier, and they fill it with meat. Meat. Yes, minced meat. Oh. They fill it with minced meat. So we are going to we're going to order that keema wala naan and we're going to eat it. Okay, let's go. नान शॉप कब से है यहाँ पे? 180 180 साल से है? नहीं। So basically this shop is 180 years old. Oh, really? This shop, the same spot, it's 180 years old. Oh, true. Yes. Lahore has 12 gates, and this is one of them, one of the gate, and this is one of the most famous gates, and this is Masjid Wazir Khan. Yes, the Mughals used to live here, used to offer prayers here. So this is a very historical place. Have you ever visited Masjid Wazir Khan? No, actually, I never. Okay, I'll take you there too. All right. So let's see the making of this naan. Okay. You want to have a close look, or this is too hot inside? Yeah. So okay. So you stay here. I'll go inside and record it. Okay. अच्छा, हमारे साथ नाया है। नाया हमारी ट्रांसलेटर है। जहाँ हमारी इंग्लिश खत्म हो जाती है वहाँ पे ये इंग्लिश शुरू कर देती है, हमें लोड करनी पड़ती है, इसको लोड नहीं करनी पड़ती। बहुत अच्छी इंग्लिश वुमन है ये। चलो भाई, हमारी ट्रांसलेटर इंग्लिश बोल के दिखाओ। कीमे वाले नान की इंग्लिश बताओ। क्या बताओ ना, कीमे वाले नान की इंग्लिश बताओ। Bread filled with beef. Bread filled beef. मैंने इंग्रेडिएंट्स नहीं पूछे, मैंने नाम पूछे। तो आईओ के साथ कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है? It's very good. है ना? It's very sweet and
he's enjoying with us. अच्छा नहीं, मेरी ऑडियंस उर्दू ही है, क्या? मेरी ऑडियंस को उर्दू समझ आती है। अच्छा, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, हमारे साथ आ ये रहे हैं। मास्क नीचे करके जरा सबको अपनी शक्ल दिखाएं। बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ही इज़ वेरी स्वीट, हमारे साथ आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और आई थिंक बिल हमें हम ले रहे हैं। अनकंफर्टेबल नहीं कर रहे। हाँ, और एक्चुअली he is very liking the culture over here, right? so you're getting what she's saying. She's kind of bilingual because we have to make the vlogs for our own audience, and our audience most of them speak Urdu, right? So we have to make this vlog in Urdu. So that's the main thing. So how's your experience going till now? How's your experience going? That's like awesome. Okay, so let's try that naan. The naan's here. That's one. Yes. This is the. Okay, so let's have a bite of this naan. Yes, yes, yes. Go ahead, go ahead. It's hot. It's piping hot. Okay. Yes. Wow, that's interesting. It's the first time I had. And like you know, like it's really crunchy, and like meat, it's really like interesting taste. I like it. This is the keema wala naan. What's it? What? Can you say it again? Keema wala naan. Female. Wala Wala naan. Yeah, yes. Rating for you. This naan. इसका क्या नाम है? इसका क्या रेटिंग पूरा? 9 out of 10. So you like Halim more? Yeah, okay, okay. 8 out of 10 rating है. अच्छा नान है, टेस्ट बहुत अच्छा है, no doubt. मज़े का है, लेकिन मैंने इससे अच्छे नान खाए हुए हैं, इससे बहुत अच्छे नान खाए हैं, लेकिन ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस, और इतना पुराना है जो कि बात तो होगी। अच्छा यार, खीर हमें नहीं मिली, काले की खीर यहाँ पे मशहूर है अंदरून लाहौर के अंदर, लेकिन वो हमें नहीं मिली, तो अब हम लोग आगे जा रहे हैं लड्डू पीठी ट्राई कराने के लिए। So basically, laddu pithi is a street food. Laddu pithi. Yes, laddu pithi. It's a street food. It's basically all the lentils, and they crush all the lentils and they fry it in oil. Okay, so basically that's a street food we eat very often. All right. Yes, it's topped up with some chutneys, with some plum chutney. यार ये है लड्डू पिठी। कौन सा चौक था ये भजन? जगह का नाम क्या है? जगह का नाम क्या है ये? वजीर खान मस्जिद है, पाकिस्तान मार्केट। पाकिस्तान मार्केट, वजीर खान मस्जिद। अच्छा यार, लड्डू पीठी खाने आए हैं हम लोग, इसको भी ट्राई करवानी है हम लोगों ने। लड्डू पीठी मुझे समझानी तो नहीं आएगी कि भाईजान इंग्लिश, मैंने ऑल द बेस इंग्लिश किया हुआ है, मुझे लड्डू पीठी का समझाना नहीं आएगा, ये अब तुम ही समझा सकती हो। नहीं नहीं, जाओ उसको समझाओ कि लड्डू पीठी क्या है, उसको समझाना पड़ेगा लड्डू पीठी क्या है। ट्राई कर। बेसिकली दिस इज लड्डू पीठी, lentil patties. Lentil patty. Yes. Taste of This Pakistan. so basically these are the combination of some 3 to 4 lentils, and they fry it in that oil. Okay, and they top it with these chutneys. यार एक प्लेट लगा दो भाईजान। The patties, they crush it and they pour that sauces onto it. That's a sweet sauce, and they also pour a spicy sauce on it. Sweet and spicy. It's a combination of sweet and spicy. Okay. And then they top it with some radish. That's the whole combination. यार कितने की है प्लेट? So all of this costs rupees 100. Okay. 100 rupees. Yes. It's quite cheap, isn't it? Yes, it's quite cheap. If you work in Japan, probably you will get more than 1,000 yen. That means only like 2 minutes, no, like few minutes work. will Okay. be like that. So, Okay. So basically, this is a very cheap meal for you. yeah. And that halim we ate earlier, it was rupees 150, 75 yen for you. Yeah. So it was a whole meal in 75 yen. That's crazy. That's crazy cheap, right? It's like if you want to eat in Japan, it will cost roughly 500 yen. So yeah, that's crazy cheap. And that naan we ate earlier, that cost us rupees 220. 220. Yes, yeah, 110 yen for you. That's still cheap. Yeah, that's still cheap. Kind of snack. Yes. And that's a very wholesome snack. You can easily fill your belly with it, right? Yeah. It was quite heavy. And it was topped with oil. It was topped with oil, that naan we ate earlier. So let's eat that dish, and you will tell us how does it taste. Okay? All right. It's all you today. All right. Yes. हमें बताएगा किस तरह का इसका टेस्ट है. It's the first time कि वो ये ऐसी कोई चीज़ try कर रहा है. So you have to make a whole bite. You have to eat everything. All right. Just like this. No. That's not a whole bite. You have to, combine all this yogurt along with this toppings and this radish. मूली नहीं डाली उसने, हैं? ओके, मूली भाईजान मूली नहीं आ रही, समझो, वो उसको समझाना बड़ा मुश्किल है,
मैं तो समझा था Okay, have it. ओके ओके Alright. लेट्स गो पता नहीं क्या हो गया मुझे मुंह इसने बना लिया मुझे लगता है इसको जरा अच्छा नहीं लगा हट गई है उसकी कहाँ No problem. It's kind of quite mysterious. Yes, it's quite material. It's a combination of many flavors. It's a fusion, Yeah, right? yeah. So you have to take 1 to 2 bites to understand the flavor profile of it. It's like you know, like. Have another bite and then tell us how does it taste. A very honest reaction, okay? Alright. You have to be completely honest. Okay. सच सच बताइए भाई. Go ahead. Taste here, and you know this one is obviously like kind of like pound cake, and this crunch one, and some sweet and sour, and you know there are so many tastes mixed up in the mouth, so it's really like mysterious. That's definitely what I've never had. So do you like it or not? I An like. honest reaction. An honest reaction. Actually, like if I was served this, I will eat it, but I'm not willing to buy this. Actually. Okay. That's a great answer, though. तो यार अपने चौथे स्पॉट के लिए हम ओहायो को लेके आए हैं बिरयानी किंग शादमान पे इनका चपाटा रोल ट्राई करने के लिए। उसको मैंने चपाटा रोल के बारे में बताया और वो बहुत एक्साइटेड हो गया कि यार इस तरह की चीज़ मैंने देखी है। उसको मैंने बताया कि ये एक फ्राइड ब्रीटोस की तरह का होती है चीज़ और बिरयानी किंग पे लेके आए हैं इसको शादमान। ट्राई करवाते हैं, वो अंदर हम लोग ऑर्डर लगवा रहे हैं, इसको ट्राई करवाते हैं और लेट्स सी हिज रिएक्शन कि उसको किस तरह का लगा। यार इट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग और मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है इसके साथ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और इट्स वेरी न्यू एक्सपीरियंस एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। डू यू एंजॉयिंग लाहौर? Yeah. Okay, so let's eat chapata roll. Okay. You want to see its making? What? You want to see the making of that burrito? Yeah. Okay, let's see. तो यार ये है चपाटा रोल बिरयानी किंग शादमान का और ये यार सच्ची को देख के हंसी जा रहा है कि भाईजान चिकन महंगा वहाँ पे लटक रहा है। खैर हम ये यार चपाटा रोल अच्छा, पर्सनली मुझे चपाटा रोल बहुत पसंद है। दिस इज द ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड ऑफ पाकिस्तान। यस, so many burritos. Yeah. If you can call them burritos, if. That's kind of ironic. Yeah. Because they don't use oil at all, right? In burritos, there is no oil. No. Yes. And it's all drenched in oil. This is called the paratha. So this is the essence of street food in Pakistan. We are not low on any ingredient. We are just so heavy on every ingredient. Right? See? This is all loaded with calories, creams and chicken and proteins, carbohydrates. Everything is in there. It's a whole meal. See the size, how jumbo that is. Have you ever seen anything like that before? Maybe no. Because like that's really big. Yeah, that's really big. And people eat 2 to 3 of those rolls in one day, Oh, true. in a single sitting. That's crazy. Are you excited or are you worried? Both. Actually, like excited. Like. But you're going to enjoy. Yeah, It's a one-time thing in your entire life. Uh-huh. So just enjoy it. Alright. Don't be tense. Okay. I eat it very often. So I'm living, you'll live too. Okay. Just go ahead. Alright. Dip it in You this did? sauce and just have a big bite. Alright. A very big bite. Okay. परेशान हो गया वो. That's my favorite. Yeah, that's really like chicken is like having really good taste, and like this roll is as well. Yeah, I really love it. What do you rate it out of 10? 10 out of 10. 10 out of 10. The best thing you have eaten today in Pakistan. What's your favorite dish till now? This will be the best. This will be the best. See, I told you earlier, right? I told you it's my favorite. It's my personal favorite. तो जनाब ये था आज का दिन ओहायो के साथ. और यार अब जब भी हमारे पास कोई टूरिस्ट आते हैं, अब वो भी मुझे यही बता रहा था कि पाकिस्तान का इमेज उसके पास ये था कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री एट ऑल. जापान में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा अनसेफेस्ट कंट्री मशहूर किया गया हुआ है. दैट्स व्हाई ही वाज ट्रैवलिंग हियर और वो यहाँ पे आया था हमारे कल्चर को देखने के लिए. अब हमारा रवैया उसके साथ अच्छा था, हमने उसको एक अच्छा टाइम स्पेंड करवाया, तो दैट्स व्हाई ही इज़ वेरी हैप्पी विद अस. और अब वो वापस जाएगा, उसका सिर्फ 2 दिन का स्टे था, आज वो वापस चला जाएगा.
और यार जब भी इस तरह का कुछ होता है हमने अपने मुल्क का नाम खुद आगे बढ़ाना है। इस ब्लॉग को अपलोड करने का भी यही सबसे बड़ा रीज़न है कि कल को कोई भी टूरिस्ट हमारे पास आता है और कल को हमारे पाकिस्तान का इमेज कोई भी देखता है तो उसको पता हो कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी सेफ कंट्री, कोई मसला नहीं है यहाँ पे आने के लिए। बस हम एज अ पर्सन एज अ आवाम हमें ये चाहिए कि हम लोग जो भी चीज़ें करते हैं हमें पता है हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, हमें उन सब चीज़ों से बचना है। तो दैट्स द लास्ट थिंग आई हैव टू से फॉर दिस ब्लॉग। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल किसी नई वीडियो के साथ, तब तक खाएं पिएं और बाकी दुआ में याद रखना मत भूलिएगा।